and the deception which this world creates for an individual. A person is in the open field, and it's the sun bright. The brightness of the sun is very in its extreme, and there is and the weather is very hot. And this person, he is very thirsty. He's looking for water. As he looks towards the end of his sight, and he sees a mirage, a water developing on the other side. He thinks there is a water there, and he runs after that. But as he is getting closer and closer, that water, that waves of those water are going away and further away from him. That is a deception which comes in the eyes of a person, which Allah subhanahu wa ta'ala explains, and in the terminology of Arabic they use the word sarab. That this is that deception which takes a person towards water, but in reality there is no water behind it. Come closer, inshallah, brothers. Those who are at the back, please come closer, inshallah. Come closer, inshallah. So Allah subhanahu wa ta'ala explains that example, كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا. That a person traveling in an open field, and he sees that mirage, and he sees that water on the ground, and he sees that there is waves of water. But as he is getting closer, that is running away from him, and when he reaches to that place, there is nothing. So similarly, this world is a deception. A person sees from his eyes, and he sees that things are creating, things are giving him different things. But as he gets close to those things, he realizes that there is nothing behind it. It was indeed a deception. And this is what Allah subhanahu wa ta'ala explains by an example to human being that understand this is how the worldly life is. बस मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, दुनिया में जो कुछ भी होता नजर आ रहा है, ये इंसान को धोखा दे रहा है। अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने जो गैब की खबरें दी, उन गैब की खबरों को मानना, उन पर यकीन रखना, ये ईमान है। Whatever we see in this world, that is all deception. And the news and information which was brought to us from Anbiya alayhimussalatu wassalam about the unseen, to believe that, to understand that, and to go according to that, that is called Iman. To believe upon the unseen which is brought to us through the channel of Anbiya alayhimussalatu wassalam. जहाँ से जो होता नजर आ रहा है वो धोखा है, और जो कर रहा है वो अल्लाह की जात है, ये यकीन बन जाए। Whatever we see from our eyes, that is a deception. And whatever we see with our eyes, to believe that is happening with the order of Allah subhanahu wa ta'ala, to bring belief on that, that is the yaqeen of a person. एक मिसाल से मैं इस बात को समझाता हूँ। वक्त थोड़ा है तो जरा कोशिश करूँगा जल्दी समझाने। जहाँ से जो होता नजर आ रहा है, अंबिया ने उसकी नफी करी और अल्लाह की जात के साथ जोड़ा। मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पे बुलाए गए। अल्लाह मियां ने कहा लाठी फेंको, लाठी को सांप बना दिया। ये माहियत किसने तब्दील की? लाठी को सांप को पकड़ने का हुक्म दिया, दोबारा लाठी बन गई। ये माहियत किसने तब्दील करी? ये अल्लाह ने किया। ये यकीन बन जाए। मुतसर्रिफ हकीकी अल्लाह की जात है। कायनात के जर्रे जर्रे की माहियत को जब चाहेंगे अल्लाह तब्दील कर दे, अल्लाह की कुदरत है। To give an example in regards to the yaqeen and the belief of a person, Maulana Sahib said that I will try to give examples and make him understand. The time is very short. And that is in the stories of Anbiya alayhimussalatu wassalam, how Allah subhanahu wa ta'ala brought this realization in the minds of people
that the reality is to believe in Allah and everything is happening with the order of Allah subhanahu wa ta'ala. The example to that is that Musa alayhi salatu was salam, he was called by Allah subhanahu wa ta'ala on the mountain of Tur. And Allah subhanahu wa ta'ala told Musa alayhi salatu was salam that the stick which he had in his hand, to drop it, as soon as he dropped that stick, it became a snake. And that stick changing into a snake, the reality of the stick changing into a snake, who did that? Similarly, when it was given the order to Musa alayhi salatu was salam to grab that snake, and as soon as he grabbed it, it changed back into a stick. The reality of that snake changing into that stick, which is the power and which is the might which did that? That is the might of Allah and that is the power of Allah subhanahu wa ta'ala. This is the reality to which Allah subhanahu wa ta'ala wants every individual, every believer to believe. मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, कुरान पाक में अल्लाह फरमाते हैं वफ़िस समाए रिज़्क़ुकुम, तुम्हारा रिज़्क़ आसमानों में। कहीं फरमाते हैं वमा मिन दाब्बतिन इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, सबका रिज़्क़ अल्लाह ने अपने जिम्मे लिया है। खुदा पाक फरमा रहे हैं कि तुम्हारा रिज़्क़ आसमानों में है। आंखों से क्या नजर आ रहा है कि जमीन से गल्ला निकल रहा है, फ्रूट निकल रहा है, हमारा रिज़्क़ तो जमीन में है। निगाहों का धोखा कह रहा है रिज़्क़ जमीन में, और खुदा फरमा रहे हैं कि रिज़्क़ आसमान में है। ये गैब की खबर है। Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ, that indeed मूसा अलैहि सलाम की कौम को जो 6 लाख से 8 लाख की रिवायतें आती हैं, खुदा पाक ने 40 साल तक जमीन पे हल चलाए बगैर आसमान पे रिज़्क़ उतार के दिए। मन व सलवा उतारा और आसमान से अल्लाह ने उनके लिए उतारा मन व सलवा। जमीन पे 40 साल तक हल नहीं चलवाया अल्लाह ने। कपड़े नहीं बनवाए कि जनाब छोटा बच्चा था छोटा कपड़ा, बच्चा बड़ा हो गया कपड़ा बड़ा, वही कपड़ा बड़ा होता रहा 40 साल तक जिस्म पे, फटा ही नहीं। ये किसने किया? खुदा पाक अपनी कुदरत से सारा निज़ाम पालने का चला रहा है। ये हमारा यकीन बन जाए, यही है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह की जात से सब कुछ होने का यकीन और अल्लाह के गैर से कुछ ना होने का यकीन। ये यकीन अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम बनाना चाहते थे। कामयाबी की पहली सीढ़ी यही है और हजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसी यकीन की तरफ बुलाया। अब तक Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ, that your sustenance lies in the sky, in the heavens. And in another verse of the Holy Quran, Allah subhanahu wa ta'ala says, وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا, that not even a single creature which crawls or goes on the face of this earth, except the sustenance of that creature or creation of Allah subhanahu wa ta'ala is in the hands of Allah subhanahu wa ta'ala. Now a person sees with his eyes that the earth is growing vegetations, the earth is growing food, and he is taking benefit. That is the deception of the eyes of a person. But in that Allah subhanahu wa ta'ala says that we are the one who is bringing the sustenance